यो आज हम बनाएंगे फीमेल एनाटॉमी एनाटॉमिकली करेक्ट फेस probably mostly this will be our goal कि इस सारे फॉर्म्स को हम कनेक्ट करें प्लस इसके अंदर सारे के सारे पार्ट्स होंगे जिसके अंदर हम सारी चीज़ें स्टडी करेंगे। आइज़ के अंदर कैसे फोल्ड्स होते हैं, लिप्स के अंदर कैसे फोल्ड्स होते हैं, नोज़ के अंदर कैसे फोल्ड्स होते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। प्लस वो कोशिश करेंगे कि इस फॉर्म को कम्प्लीटली बनाने की कोशिश करें। डिफरेंट एथनिसिटीज़ होती हैं जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, पर जो फॉर्म्स होती है मेन वो आइडियली सेम होती है। जैसे कि इसके अंदर है, अगर हमने इन फॉर्म्स को स्टडी किया तो हम डिफरेंट एथनिसिटीज़ के अंदर इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉर्फ कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सी एथनिसिटीज़ के हम अंदर जा सकते हैं, सो देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ एथनिसिटीज़ दैट वी कैन स्टडी फ्रॉम अफ्रीकन, कॉकेशियन, रशियन, अमेरिकन, इंडियन, एशियन एंड लॉट्स एंड लॉट्स। हाँ, जितना एज फैक्टर भी बहुत डिपेंड करता है कि किस किस तरीके से आप उन्हीं फोल्ड्स को मॉडिफाई करके अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो सी फोल्ड्स एंड फॉर्म्स, these are the main principles, main pillars of anatomy. You can morph them, you can change their forms volume wise to achieve different results. मोस्टली यही एनाटॉमी प्रैक्टिस के अंदर सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाली चीज़ है मेल और फीमेल फॉर्म्स के अंदर। मेल का फेस बनाना रिलेटिवली आसान है क्योंकि आई डोंट नो व्हाई बट फीमेल फेस इट्स वेरी टिपिकल, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। बहुत कॉम्प्लिकेटेड शेप्स हैं फीमेल के फेशियल स्ट्रक्चर्स में इन टर्म्स ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे फोल्ड्स बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं दिखाऊँ एक मेल स्कल और फीमेल स्कल के बीच का डिफरेंस, सो दैट इज़ वेरी वेरी ड्रास्टिकल, नॉट वेरी मच बट बहुत ज़्यादा भी नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ मेल, you see this is very angular and this have less angle, I mean broad angle, बहुत ही स्मूथ है मेल से। मेल के अंदर फॉरवर्ड टीथ होते हैं, इसमें थोड़े बैकवर्ड होते हैं फीमेल के अंदर। प्लस जो फॉरहेड होता है वो ज़्यादा फॉरवर्ड प्रोट्रूडेड है, मेल के अंदर ये थोड़ा स्लाइटली बेंड है। जितना ज़्यादा बोन स्ट्रक्चर हमको मेल के अंदर मिलता है उससे लेस मिलता है यहाँ पे फीमेल के अंदर। प्लस मेल्स के अंदर जो आईब्राउ बोन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोट्रूडेड है, प्रोमिनेंट है। फीमेल के अंदर ये भी प्रोट्रूडेड है पर फॉरहेड के अंदर पास ये वाली मसल, ये वाली कम, प्लस ये वाली ज़्यादा, प्लस देयर इज़ एन इंडेंटेशन लाइक दिस एंड लॉट्स। तो आई रिकमेंड स्टडिंग एनाटॉमी, स्टडी एनाटॉमी वेरी गुड। जितना ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं उतने ज़्यादा बेटर माइक्रो स्टेप्स आपके पास आएंगे किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। फॉर दैट आई रिकमेंड एनाटॉमी फॉर स्कल्पचर्स, अ ग्रेट बुक, हाईली रिकमेंडेड। इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे रेफरेंसेस हैं। दिस इज़ द कवर पेज ऑफ एनाटॉमी फॉर स्कल्पचर्स, वेरी गुड बुक, हाईली रिकमेंडेड। सो शुरू करते हैं। वी विल यूज़ दिस एज अ रेफरेंस, ये वाला पेज, डिटेल शेप ऑफ द फीमेल नेक। अब इसके अंदर नेक की बात हो रही है पर इसके अंदर हमारे पास फेशियल फॉर्म्स भी हैं जिनको हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ प्रैक्टिस। हम इतना शार्प नहीं बनाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम नॉर्मल ही बनाएं विदाउट एनी शार्पनेस एंड स्टफ। सो लेट्स स्टार्ट। मैं मोस्टली काम करता हूँ पर्सपेक्टिव ऑन करके विथ 35 डिग्री व्यू एंगल के साथ।
थोड़ा बेटर व्यूइंग एंगल मिलता है. प्लस आई यूज़ फोकल शिफ्ट this and this intensity for move brush. Very good setting. ना ज़्यादा ना ज़्यादा कम. So first of all we will use this this helmet shape. See, this is not fully curved. This is a mostly cylindrical, less oval kind of shape, more like a helmet shape. So we will protrude this down, not this much but this much. So ये आ गया हमारा चिन एरिया, सॉरी जॉ एरिया. अब हमें इस पार्ट को जॉ के पार्ट को इनवर्ड पुश करना है और चिन वाले पार्ट को स्लाइटली आगे बढ़ाना है. इस तरीके से वी विल क्रिएट अ डिफरेंट काइंड ऑफ दिस इंडेंटेशन जो हमें बताएगा कि अच्छा यहाँ पे जॉ ख़त्म हो गया, प्लस यहाँ से बैक ऑफ द हेड शुरू हो चुका है. यू कैन ऑल्सो रेफर टू दिस अगारोज हेड, जो आई गेस दिस इज़ अगारोज हेड सॉरी, जो ज़ीब्रश खुद से सामने से दिखता है, जिसके अंदर फॉर्म्स बहुत ही वेगली बट वेरी प्रोमिनेंट लैंडमार्क्स दिए हुए हैं. हमेशा इसको रेकमेंड करना चाहिए. आई मोस्टली हेयर एंड देयर मैं दिखता रहता हूँ यहाँ पे, अच्छे फॉर्म्स हैं यहाँ पे. सो फॉर फीमेल हमें फेस को बहुत वाइड नहीं रखना है, नैरो रखना है, क्योंकि फीमेल का फेस बहुत ही नैरो होता है. रिमेंबर द फोरहेड थिंग आई वाज टेलिंग अबाउट कि हमें इसको बहुत पीछे नहीं रखना, लाइक इतना पीछे नहीं रखना, हमें स्लाइटली फॉरवर्ड रखना है. अगर मैं फीमेल के हेड के बारे में बात करूँ तो ऐसे स्लाइटली पुश्ड अवे. अगर मैं सबसे टॉप एरिया के बारे में बात करूँ, जो सबसे एक हेड के अंदर सबसे ज़्यादा टॉप एरिया कौन सा होता है, दैट इज़ दिस, ये वाला पार्ट. और सबसे बाहर निकला हुआ पार्ट साइड में ये वाला होता है. टॉप में ये जो कि एकदम सेंटर में आता है, मोस्टली सेंटर में आता है, नॉर्मली वो यहाँ पे आता है मोस्ट लेंगे में. हाँ, ये एक बेटर एग्जांपल है. अगर मैं सबसे टॉप व्यू देखूँ तो वो यहाँ पे आता है स्लाइटली हेयर, एंड सबसे बाहर निकला हुआ पार्ट आता है यहाँ पे, दिस वन कहीं यहाँ पे. तो यू कैन रेफर दीज रेफरेंसेस, आपको ये पिंटरेस्ट पे मिल जाएंगे. वेरी गुड एग्जांपल्स to understand the landmarks. हमारा फेस के पास चलते हैं. वेरी गुड एग्जांपल. अगेन आई विल एडमायर दिस एग्जांपल अगेन एंड अगेन, क्योंकि बिकॉज इट इज़ another tip for sculpting human faces is to sit in moderations. Sculpt in moderations because you will get a thing that most sculptors get, that is tunnel vision. Tunnel vision होता है कि आप नहीं देख पाते लैंडमार्क्स अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक बैठे हों एक ही स्कल्प्ट के ऊपर. तो आई मीन काम करते करते, नॉट बैठे बैठे. मैं अब इसको स्लाइटली टच कर रहा हूँ. यू सी आई एम नॉट कम्प्लीटली फॉलोइंग दिस रेफरेंस, क्योंकि मैं फेस बना रहा हूँ अपने हिसाब से, बट आई विल यूज़ दीज लैंडमार्क्स एज माई गाइडिंग पॉइंट्स, क्योंकि आपका हर फेस अलग बनने वाला है. अनलेस until you are not using you're not making likeness. If you make likeness, then it's a different story. You have to create some landmarks for the actor and actresses, whatever you are planning to do. If you look, I am slightly touching it, and इससे ये शेप में आने की कोशिश करेगा. मैं मोस्टली नेक पार्ट अलग बनाता हूँ to give me a better control. थोड़ा स्लाइटली बेंड होगा एंड अबव लाइक दिस. मैं इसको थोड़ा छोटा करूँगा एंड ओवर लाइक दिस. सिमेट्री ऑन है, बेटर. Now you can completely follow the skull structure
of your reference, but क्योंकि स्कल आपको एक हद तक हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड द इनर वर्किंग ऑफ द मॉडल, पर उसके ऊपर बहुत सारे बोन्स आएंगे और बोन्स के ऊपर आएगी मसल्स। सो मसल्स एक अलग फॉर्म में चली जाएंगी, तो ध्यान रखना होगा कि बार बार आप मसल्स के फॉर्म को देखें या फिर कुछ इस तरीके की फॉर्म्स को देखें। मेक heads with skeleton is better, but not बार बार ये प्रैक्टिस करने से आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, बट आई हाईली रिकमेंड कि मसल प्रैक्टिस भी करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी मसल्स कहाँ पे जाती हैं। सो नाउ आई हैव रीटच्ड इट। अब मैं इसको थोड़ी रेजोल्यूशन बढ़ाऊँगा, 40 आई गेस इज़ plenty for now. You see रेजोल्यूशन इज इंक्रीज्ड। अब देख रहे होंगे कि मैं अभी तक अपने इसके ऊपर कुछ काम नहीं किया है, क्योंकि हम मोस्टली इसके ऊपर काम करेंगे पहले, देन वी विल स्टार्ट टू टच अदर थिंग्स। इफ़ यू लुक वी हैव दिस इधर ईयर, सो यहाँ पे जॉ लाइन ख़त्म होती है, यहाँ पे जॉ लाइन ख़त्म होती है, एंड यहाँ पे आपको ईयर का एक लैंडमार्क मिलेगा यहाँ पे बनाने के लिए। Ear will determine many things, where to go nose, where to go eyebrows and eyes। इस ईयर के सेक्शन के अंदर ही हम सारे के सारे नोज़ एंड ईयर्स को बनाने वाले हैं। सो मैं इसको मार्क कर देता हूँ, एंड मास्क करने के बाद मैं इसको स्लाइटली निकालूंगा। While making heads you have to be patient, because रिज़ल्ट थोड़े टाइम में आ सकते हैं, बाद में आएंगे, पर you have to be patient. Trust the process. Trusting the process is must. If you don't trust the process won't trust you. I'm slightly bending the outer part of the model ears. Let me see what I can do. Best. मैं इसको ज़्यादा नहीं बनाऊंगा फ़िलहाल के लिए, थोड़ा कम बना के छोड़ूंगा, बाकी हम इसको बहुत बाद तक एडिट कर सकते हैं। इफ़ यू लुक क्लोजली इन आवर रेफरेंस, जो ईयर का इनर पार्ट होता है वो बोन से चीक बोन से छुप जाता है। सो हमेशा जब भी आप ईयर्स बनाएं, कोशिश करें कि वो अंदर की तरफ हो थोड़ा सा, जब यहाँ पे बोन्स आएंगी तो ये छुप जाएगा इस तरीके से। नाउ वी विल स्टार्ट टू डू दिस। इफ़ यू लुक क्लोजली, जहाँ पे ईयर्स के स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ पे आइज़ होती हैं, विच इज़ ट्रू, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ईयर्स के एकदम एंड होने पे आइज़ बनानी है, या फिर आप उनके इन बिटवीन रह के भी बना सकते हैं। So what I will do this, take my clay builder brush and carve it in. You see I'm carving in very hardly, plus make this thing here, हमारा माथा, forehead also, we call it forehead. Trust the process, always trust the process. While making head, always look with all the different angles that you can find, because most importantly ये वाला एंगल, third fourth I guess half, I guess जो भी ये एंगल होता है, बताना जिसको पता हो। सो व्हाट आई विल डू, मुझे दिख रहा है कि मेरे हेड की थोड़ी हाइट कम है ऊपर से, तो मैं इसको स्लाइटली थोड़ा अबव करूँगा। द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ स्पेंड मोर टाइम ऑन द फॉर्म मेकिंग, इन द फॉर्म मेकिंग। जितना ज़्यादा टाइम भी यहाँ पे स्पेंड करोगे,
you have a better chance to make a very good head, a very powerful looking, a very beautiful also looking head, because forms are your friends. If forms break down, uh, things will go south very fastly. uh, क्योंकि फॉर्म्स ही आपके पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगी इफ़ यू लुक क्लोजली. सो लुक हेयर, ईयर्स यहाँ से आइज तक आएंगे. सो इफ़ वी हैव आइज हेयर, द ईयर्स विल कम राइट हेयर, slightly bent, and for the nose part it's very big ears I have made. While making sculpt, आप बार बार फॉर्म्स को टच अप करेंगे, एंड दैट ऑल्सो मीन्स कि आपके जो मेन फॉर्म्स हैं उन पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब ईयर का एंड होगा वहाँ पे आपको नोज़ का भी एंड बनाना है. फॉर एग्जांपल हियर, यहाँ पे. सो व्हाट आई विल डू, आई विल पुश इट out slightly. I will bend this. If you see here, आपका face इस तरह से लाइन में होना चाहिए. So like this, if I do this, मेरा ये face part currently ठीक ठाक जा रहा है I guess. बाकी बनाते बनाते we will find out where we do stuff wrong, where we do stuff correct. मैं थोड़ा सा इसको और अंदर की तरफ पुश कर रहा हूँ, प्लस मैं यहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम प्रोवाइड करूँगा. इफ़ यू लुक दिस वे, आपको इस तरफ से बहुत बार अपने हेड को देखना है कि कहाँ पे आप गलत जा रहे हैं, कहाँ पे सही जा रहे हैं. आई विल यहाँ पे भी एक इंडेंटेशन है. इफ़ यू सी हियर, हेड कभी भी सीधा नहीं होता, माथा स्पेशली. थोड़ा सा यहाँ पे एक बेंड मिलेगा आपको इस तरफ से अंदर की तरफ पे. मोस्टली ह्यूमन में होता है. मेरे कलीग्स, मेरे जो फीमेल कलीग्स हैं, मैंने उनके सर पे थोड़ा बहुत बेंड देखा है, और इट्स लाइक दिस, अ लिटिल इंडेंटेशन इनसाइड, और समटाइम्स इट्स आउटसाइड, बट देयर इज़ समथिंग. सो इट डिपेंड्स ऑन द फेशियल स्ट्रक्चर एंड द बॉडी स्ट्रक्चर, आप किसको बना रहे हैं. प्लस यहाँ पे एक इनवर्ड इंडेंटेशन स्लाइटली, एंड हियर लाइक दिस, जो कि आपका हियर आपको इस पार्ट से डिफ्रेंशिएट करना है. फॉर एग्जांपल लाइक दिस. Now what I will do, I will create this. यहाँ पे मैं थोड़ी जगह बनाऊँगा, प्लस मैं अपनी चिन को थोड़ा सा रिफाइन करूँगा. इफ़ यू नोटिस्ड, रिमेंबर्ड कि हमने जो फीमेल हेड देखा था वो स्लाइटली बेंड था, जो हमने स्कल देखा था. सो आई विल डू द सेम थिंग हियर, स्लाइटली बेंड. प्लस जो फीमेल का फेशियल स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह होता है कि उनकी जॉ लाइन थोड़ी इनवर्ट होती है कुछ इस तरीके से, प्लस अ बिट अप, नॉट टू मच, नॉट टू लो, बट अ बिट. मैं चिन को थोड़ा सा इस तरह से प्रोट्रूड करूँगा, प्लस हियर अ लिटिल टचअप्स, यहाँ पे थोड़ा इंडेंटेशन. As you can see, I am not going high poly very fast. I am improving my forms as much as I can to retain the complete control in my hands. जितना ज़्यादा आपके हाथ में कंट्रोल होगा उतना बेटर है. अगर मैं सबसे टॉप से देखूँ अपने फीमेल फेस को जो मैं बना रहा हूँ, वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास एक ओवम शेप होना चाहिए, विच इज़ नॉट. I have to bend this a little. If you see, अगर मैं यहाँ से थोड़ा पुश करूँगा, सबसे टॉप से पुश करने में बेवकूफ़ी होगी क्योंकि इस तरीके से आपका ये स्ट्रक्चर ख़राब होगा. डू दिस अ लिटिल बेंड एंड ट्राई टू पुश इट इन. हियर मेरे को यहाँ पे कुछ ज़्यादा पावरफुल इंडेंटेशंस दिख रहा है. टॉप से करना ही ज़्यादा बेटर है क्योंकि आपको बिगर फॉर्म्स का पता लगता रहेगा. यहाँ पे ईयर साइड यहाँ पे सही आ रहे हैं. थोड़ा आगे की तरफ पुश कर सकते हैं इनको, बट दिस इज़
right for now. And also ये थोड़ा सा back of the head is slightly protruding outside, which is not correct, and ears also should go inside a bit. Nose. Now I'm creating the forms for nose. फीमेल का नोज़, अगर आप यंग फीमेल बना रहे हैं तो उसका नोज़ स्लाइटली अबव पुश, और अगर कोई ओल्ड लेडी तो उनका थोड़ा डाउनवर्ड में. दिस इज़ नॉट अ विच क्राफ्ट, बट दिस ऑल्सो, दिस इज़ नॉट अ विच, आई एम सॉरी. अभी मैं एक काम करूँगा कि मैं दोनों को मिरर एंड वेल्ड कर दूँगा ताकि मेरे पास दोनों तरफ सेम अमाउंट ऑफ कंट्रोल बना रहे. अब मैं एक बार राइट साइड वाले प्रोफाइल पे जाके चेक करता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं बेटर. एज यू कैन सी यहाँ पे माथा काफ़ी ऊपर तक सीधा है, हमारा जल्दी से वो बेंड हो गया है. तो आई विल डू दिस अ बिट स्लाइटली. कोशिश करें कि जिस एंगल से भी देखें आप, यू हैव बेटर कर्व्स. बेटर कर्व्स होने से ज़्यादा अच्छा पावर मिलेगा आपको कंट्रोल करने के लिए. I look this is a jawline part and this is the downward double chin कह सकते हैं इसको, the fat deposit beneath the chin. So do this, it's a slight angle, not completely horizontal, so mine also this. मैं देख रहा हूँ कि नोज़ का ये पार्ट चिन के साथ आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा अंदर पुश करूँगा. ऑल्सो a bit closer, and I see eye, और ये एकदम सामने सामने है, और I have to push this a bit farther. प्लस ये साथ में कनेक्ट होता है इस तरीके से. यहाँ पे हमारी चिन बोन होती है. नॉट टू पुश इट वेरी फार, जस्ट लाइट टचेस. And here we go. I will take my move brush and मैं अब भी इसको थोड़ा बहुत पुश करूँगा अंदर की तरफ to get more feminine features, not to overdo it but bit. यहाँ पे थोड़ा smoothness here also. Now I will do this कि मैं इसको थोड़ा शार्प कर देता हूँ. बहुत ज़्यादा शार्प नहीं करना, नहीं तो बहुत अजीब दिखना शुरू करेगा. I will take the move brush and create jaw forms over here. It's good. मुझे दिख रहा है मेरा लोअर पार्ट थोड़ा ज़्यादा नीचे है, so I'll push it up. Plus jaw, push it up a little. ठीक है, done. As you can see, मैं अब तक इसको हाई पॉली लेके नहीं गया हूँ because currently I need to fix some things. Here, nose part here, a little flesh over here. यहाँ पे थोड़ा cheekbone action. Nice. थोड़ा सा नेक के ऊपर काम करेंगे. मोस्टली नेक का टेंडेंसी है कि वो बैक ऑफ द हेड से शुरू होता है
इफ़ यू सी वन मोर थिंग कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा। नोज़ जहाँ पे एंड होती है वहाँ के आसपास ही हमारा बैक ऑफ द हेड ख़त्म होता है, लाइक दिस। इफ़ आई डू दिस दिस क्रॉस सेक्शन and push it in a little, so it's not wrong. You can create a very good head like this. Now what I will do is take my head like this, push it in, take my neck, sorry. फ्रंट से देखते हैं कि हम जॉ लाइन के कौन से एंगल से इसको निकालेंगे। here is correct, a bit in, and from this side it's like this, it's coming in angle. I will push a bit in, मैं थोड़ा आईज को नीचे करूँगा प्लस ईयर्स को भी। Here also bit nice. Upper part is slightly here, यहाँ पे थोड़ा सा ये it's going well, हाँ ठीक है। अब मैं थोड़ा रेजोल्यूशन इंक्रीज करता हूँ नेक का। I will keep them separate for now. I will merge them after I get my desired forms. Here some action here, these muscles here, and smooth. What I like to do is pinch it inward with the help of damp standard, also making this form, and here we go, clean looking neck. फेस के रेजोल्यूशन इंक्रीज करते हैं, हम जाएंगे 120 डायनामिश के अंदर। I will mirror and weld. This is not necessary, but I like to do it. Now we need to clean the parts. सबसे पहले हम ईयर की तरफ जाते हैं। पहले तो मैं फॉर्म्स को ठीक करने की कोशिश करूँगा इस तरीके से। I'm using multiple brushes. You can see here what brush am I using. This is polish brush, this is clay buildup, this is damp standard. मैंने hotkey लगाई हुई है 1 2 3 and 4 is Z modeler. If I press G, move tool से आता है, move tool इससे आता है। I'm pushing this thing inside. If you see here, ear घूम के inward जाने की कोशिश करता है, so I will do this like this, इस तरीके से, and take my brush tool, move brush, clay buildup brush, and push it in. मैं ज़्यादा पुश करूँगा ज़रूरत से, क्योंकि बाद में मैं इसी फॉर्म को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकता हूँ। I will press move brush and make the forms correct and dynamish it again, and this pinna, I guess it's called pinna, this is also a bit, ये थोड़ा कम होता है। अब I will do this,
make a slightly question mark, this question mark, here is a question mark, question mark. Move this inward a bit, यहाँ पे इस तरीके से, एंड यहाँ पे थोड़ा गैप को मेंटेन करते हुए इनवर्ड पुश, यहाँ पे इनवर्ड प्लस यहाँ पे वॉल्यूम। ईयर के पीछे वॉल्यूम होता है जो टेंडेंस को पकड़ के रखता है। यहाँ पे आप गैप बना सकते हैं इन दोनों के बीच में, डायनामिश। Now it's time to smooth the nose a bit. I'll do this, cut inside this, cut volume, move brush, यहाँ पे हमारी बोन होती है, नोज बोन जिसे कहते हैं, यहाँ पे कट होगा slightly above here. Take dam standard and carve it in. I like to nose little puffy and little downwards also to give it more feminine features. Here, dynamish. Okay, nice. It's bit outward. Here I will give some push, some smoothing. Here also, if I look this way, यहाँ पे थोड़ा और गैप होगा. Always look from the other angles. यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हेड कुछ ज़्यादा बाहर पे ट्रूड हो रहा है, so I have to push it in. If you see, यहाँ पे एक डोम क्रिएट होगा, छोटा सा डोम, not big deal, but it is there. Let's slightly in. Here also, these are very straight lines, so I will do this, make them as straight as possible. They are like this in this angle, upward like this. Simple form changes will help a lot if you look them clearly and closely. Where are the main forms are going? This helps a lot. Like यहाँ पे अब भी head ज़्यादा बड़ा लग रहा है. Try different angles always. Biggest strength. And smooth. It's nice. I'll push it in a bit. Nose को मैं थोड़ा छोटा करूँगा और इसको backward. Now what I'll do is make the nose little upwards and connect those parts. Nose कभी भी खाली नहीं होती, I mean, or they always connect. It's a whole circle. Now I'll smooth the other features.
this is so far we have gotten. I'll push it a bit inside here, some smoothing, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा मैं इसको कर्व करने की कोशिश करूँगा. फीमेल्स के अंदर जितना ज़्यादा कर्व हो उतना बेटर. हेड के अंदर, आई मीन फुल बॉडी के अंदर ही मोस्टली. यहाँ पे मैं आई सॉकेट्स के लिए जगह बनाऊँगा. यहाँ पे ऑल्सो थोड़ा इंडेंटेशन. यहाँ पे आई बोन्स. if you do it right, without, if this person is very skinny, you can see their skull inside, and the skull looks very what do you call it, promising कि इसकी तो हड्डियाँ ऐसी हैं. You can see the skull. So for example, अगर मैं फीमेल हेड को के बोन स्ट्रक्चर को दिखाऊं, दैट इज़ दिस, सो यू विल गेट द बेटर आइडिया कि कौन सा पार्ट कहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा. लेट्स फॉलो दिस फॉर अ वाइल एंड विल गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग. फॉर एग्जांपल, आइज़ और आइज़ का आईब्रोज का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट काफ़ी आगे होता है. एंड एज यू कैन सी दिस पार्ट गोज लाइक दिस. और हम इसको थोड़ा सा आगे कर देंगे. this thing goes like this and like this. ईयर से कनेक्ट होती हुई, ईयर का पार्ट ये है जो हम ये देख रहे हैं. एंड दिस मीन्स कि यहाँ पे थोड़ा इस तरीके से हम बोन स्ट्रक्चर को दिखा सकते हैं. यहाँ पे जाएगा एंड दिस विल गो पुश इट इन अ बिट हियर. यहाँ पे हमारा बोन कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगा, प्लस इस तरह. अगर मैं इसको स्मूथ करूँ, सो यू कैन सी हमें काफ़ी हद तक इसका स्कल दिखना शुरू हो गया है. ऐसा लग रहा है कि स्किन के अंदर से हम स्कल को देख सकते हैं. प्लस यहाँ पे इतना इंडेंटेशन है. अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से देखूँ, गो लाइक दिस, सॉरी एक सेकेंड, goes like this and like this, so you can smooth it. Now you can clearly see the end of the jaw here. This always helps. आप देख सकते हैं that यहाँ पे इस तरीके से आप अपने स्कल्प्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं. यहाँ पे थोड़ा slightly enlarge and you can see this is a slight indentation that you can make, जो आपके स्कल्प्ट को more vividly and थोड़े रियलिस्टिक वे में लेके जाने की कोशिश करेगी. See, while making faces, try to get as much as reference as you can, because reference always helps. Always. Good reference can make a difference, a huge difference. As I can see, मेरे को अपनी जॉ को थोड़ा इनसाइड पुश करना है, थोड़ा यहाँ से. So we made this far, this. Okay, now we'll do the lips and eyes. Let's go to the reference. अगर मैं आइज़ की बात करूँ तो प्लानिंग के हिसाब से वो हमें
यहाँ पे मिलनी चाहिए थी, लाइक यहाँ पे हमारी आइज़ होंगी इस प्लेन पे, दिस विल बी आर प्लेन जहाँ पे हम आइज़ देखेंगे, और आइज़ इतनी होंगी कि हम उनको दो पार्ट में डिवाइड कर लें, हियर एंड हियर। और अगर मैं ईयर की बात करूँ तो जहाँ पे आई एंड हो रहा है उसके स्लाइटली अबव हमें ईयर दिखाई देगा यहाँ पे, विच इज़ अ बिट हायर, बट रहने देते हैं, ये अच्छी पोजिशनिंग में है। एज आई कैन सी थोड़ा सा इसको पफ करना बनता है ताकि थोड़ा फ्लैश दिखाई दे, स्लाइटली इनवर्ड हियर, प्लस मैंने यहाँ पे बहुत कम वॉल्यूम डाला है जबकि मुझे ज़्यादा डालना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इनवर्ट पुश करूँगा, नोज़ को थोड़ा स्ट्रक्चर ठीक करते हैं आगे बढ़ने से पहले, बिट थोड़ा सा ही इस तरह। यू कैन डू मल्टीपल नोज प्रैक्टिस इन अ डे। इफ़ यू डू फेस वेरी फास्ट तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पता लगनी शुरू हो जाएंगी, एंड वीकनेसेस ऑल्सो। What I'll do is a push here and here and a bit inward. Interesting. Now what we'll do, हम इन प्लेन्स को फॉर्म्स की तरह यहाँ पे ऐड करेंगे। एज यू कैन सी इसका रेफरेंस फेस काफ़ी पफी है और हमारा फेस काफ़ी ज़्यादा स्किनी है, बिकॉज हमने अभी तक इसके अंदर फ्लैश मसल्स को ऐड ना करते हुए बस स्किन के स्कल के ऊपर स्किन को रैप कर दिया। तो व्हाट वी विल डू, विल ऐड मल्टीपल लेयर्स ऑफ मसल्स इनसाइड, जिससे इसके अपीयरेंस में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा। सम हियर, अ बिट हियर, and this is a very good muscle. It goes like this, it ends over here, this one, ये नोज से स्टार्ट होती है, एंड दिस इज़ वेरी प्रोमिनेंट मसल। अगर ये ज़्यादा हो या फिर ये बैगी हो या फिर बहुत शार्प हो तो ये एज फैक्टर को बहुत जल्दी से डिफाइन करती है, कि पर्सन इज़ रियली ओल्ड या फिर नॉट रियली ओल्ड, स्लाइटली यंग। एंड दिस मसल, these muscles also, which will go like this, यहाँ से नीचे, this one fleshy, this one, this will go from here, this will go from above here, यहाँ पे मैं इसको स्लाइटली बेंड करूँगा इधर, एंड देन इन सबको कनेक्ट करते हुए this one. Now these are not muscles, I'm just creating their forms to represent them. After smoothing you can see the volume is coming. अब मैं आई को बनाता हूँ। As you can see we have very prominent muscles here. अगर मैं देखूँ तो मसल्स ना सही, थोड़ा फॉर्म्स सही, कि अगर मैं इसको इस तरह से पुश करूँगा, पहले मैं यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट करने की कोशिश करूँगा, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वॉल्यूम। सी, इट मेक्स अ होल लॉट ऑफ डिफरेंस। वॉल्यूम हियर, देन स्लाइटली ओवर हियर, पुशिंग इट इनवर्ड, underneath also. Now this is not the correct way to do it. I don't know what the correct means. This is my way of doing it because this provides me a better control.
इसको push it in slightly outside, this one, this slightly inside, and we have this muscle that goes from here to here, and we have this here that goes till here, connecting here. I'll make some space for the eyeballs. I'll push them a bit outside. Now I'm pressing Alt and moving my brush like this. So अगर अब मैं Alt प्रेस करूं और इस तरीके से अपने ब्रश को स्लाइड करूं, तो rather than if I do this, this will go like this side by. अगर मैं Alt प्रेस करूं तो ये आगे पीछे जाएगा. That is what I want right now. तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ. With the slightest tap, you can achieve better results. Now I will do the damn standard brush. Make space for the eye here. Now press G for the move brush and make some space. Eye bags, and connecting all, there is a simple trick. It goes like this: here, connecting here, and then connecting over here like this. This goes cheekbone से होके ये ऐसे जाएगा. Now don't do it more with don't do it with more pressure. Do it slowly. I can see यहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम की ज़रूरत है. Now I will add 2 eyeballs that I prepared earlier. Let me see. I'll do this. Now eyeball का साइज़ क्या हो? eyeball का साइज़ होगा कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक 6 eyeball डालूँ तो, but eyeball को measure करने के बहुत सारे तरीके हैं. So I'll do this. Is अगर मैं सेंटर में एक eyeball रखूँ तो क्या मैं उतना डिस्टेंस मेंटेन कर पा रहा हूँ क्या? Like this here. तो I'll push it in. अब उसके हिसाब से अपने आई जो लिड्स मैंने बनाए हैं उनको कंट्रोल कर सकता हूँ, and it will look much better this way. A little outside. Whenever your sculpt look ugly, just trust the process. Wait for it, and you will improve it in a bit. Always. This is the key. आई बैग्स के लिए इतना स्पेस प्लस secondary eye bag goes here. This is more prominent in older people. Secondary eye bag, it goes very prominent like this. बूढ़े लोगों में connect होता है यहाँ से, and this eye bag also बूढ़े लोगों में very prominent. It's like this. In young people it doesn't really show
Now if I zoom out a bit, in this time, अब इस समय अगर आप कोई भी फेस बना रहे हैं, सो यू शुड लुक फॉर द फॉर्म्स कि आप कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं क्या. सो मेरे को थोड़ा फेस ज़्यादा इलोंगेटेड दिख रहा है, तो मैं उसको स्लाइटली इनसाइड कर देता हूँ. एंड to make it more smoother, refined, I will remove the uh, more bone features, and it will go more feminine very fast. I need more volume over here, and it will go here, providing support to the back jaw. Now this muscle is very important. I guess it's fat or muscle, I don't know. Here, this one. This can make the whole difference in the world. While making it, make sure this thing is very sharp and straight from the side angle. I want this. I will go to free. मैं इतने पार्ट को कवर करूँगा and make this slightly inside and keep this here, keep this here, and यहाँ पे volume थोड़ा. Here also I will remove some and add some a bit more. Smooth it out and keep this firm and make it a bit inward from every angle. यहाँ से भी मुझे थोड़ा चाहिए. Yes, smooth. Now you can increase the resolution and play with the details, but I won't recommend it because अगर आपके forms ख़राब हो जाएंगे, you can also retopologize it and then move towards the further stages. That's a very good practice. Now what I will do, I will create some volume over here for the lips, smooth it out, and from here iris के end से center तक we will create lips. For that I will do this first to create the upper portion of the lips. From here make it bit outside to here. Always push it in, move this a bit out, not too much. Whenever you feel like this is not correct, just trust the process. Always trust the process. Go here, puff it out. As you can see, मैं यहाँ से lips को लेके नहीं आया, यहाँ से, क्योंकि mostly lips इस तरफ से ज़्यादा आते हैं, and then this is pretty flat. You can see your lips in mirror also to confirm it. Puff it out. यहाँ पे मैं डालूँगा एक indentation, and here I will push. Here also I will push a bit, not from that far. Here I will push. Press G, make room for the chin,
इतने पार्ट को मैं पकड़ के स्मूथ करूँगा एंड देन आई विल मूव इट अप हियर ऑल्सो, नोज को थोड़ा नीचे, इतने पार्ट को मैं करूँगा स्लाइटली बैक, I will puff this up and nose को slightly inward and इस part को पीछे, and move this a bit outside. हेड को थोड़ा मैं स्लिम करूँगा here also. Now what I will do is connect these bridges, smooth them a bit and give volume to the lips, smooth it out and here this part, now it's a matter of adjustments कि हम किस चीज़ को ज़्यादा ऐड करें, किस चीज़ को ज़्यादा सब्ट्रैक्ट करें to look it more feminine or to look it more attractive. Of course I can do one thing, I can remove some stuff over here and she will instantly look more chiseled. Here I can give her a chin angle like this and extract this part, and for the most part मुझे इसको slightly back करने का है, nose को थोड़ा push करना है, look it from all the different angles. यहाँ पे ये वाला muscles मुझे ऐड करना है and then I will add some flesh over here, flesh over here and flesh over here. Flesh over here और अब बारी है लिप्स को प्रॉपरली ठीक करने की. So I'll push it in a bit far. साइड व्यू में जाके चेक कर सकते हैं कि कितना फार तक हमें नोज के just above and beyond, just above. As you can see this is pretty straight and हमें भी इसको पुश करके पीछे करना चाहिए. I will smooth it, add some more, add more, remove more stuff, smooth, add more, smooth. Now more indentations, powerful ones here and then here. I will do this कि मैं chin को slightly pointy करूँगा, not that far. Nose को slightly in
पे volume and here. It's a matter of retouching. I need to take away from here and add stuff over here. And smooth it out. Slightly up outside and here I need to smooth it out. Now I'm retouching it. From every angle I'm pushing it, and it's almost 3456 brush strokes जब से हमने स्टार्ट किया है. मोस्टली मेरे जितने भी स्कल्प्ट्स होते हैं वो इतने के अराउंड ही होते हैं. Now for the eye part, push it down, slightly up. Now what I can do is increase the resolution from here and work on it. But let me tell you, this is very dangerous territory. यहाँ पे वॉल्यूम्स को इम्प्रूव करना अब थोड़ा मुश्किल होगा. थोड़ा नहीं, काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि वी कैन नॉट चेंज बिग वॉल्यूम स्टफ. हमें बहुत ही सिर्फ लिटिल डिटेल्स पे ही काम करनी है. लाइक वॉल्यूम के लिए हमें पिछले स्टेप पे जाना पड़ेगा. एक और तरीका है, आप वॉल्यूम चेंज कर सकते हो. दैट आई विल शो यू इन अ बिट. इसको क्लियर कर लेते हैं पहले. आएगा ये वाला पार्ट, एंड देन आई विल यूज this lazy mouse for my pinch brush. Increase some intensity a bit more to make it more punchy.
आई विल इन यहाँ पे आई के ऊपर थोड़ा वॉल्यूम क्रिएट करूँगा टू मेक इट लुक मोर baggy, and here let's make this here. We will do some chisel stuff over here. Nose थोड़ा ज़्यादा pushed है outside, हम इसको inside push करेंगे and then push it in like this. I need more volume over here, and you can push it up. Some volume over here, but not too much. It will ruin the sculpt. And we'll use this planer brush. Smooth this out, make some indentation, not too much. Now I'll use my handy dandy pinch brush. Make it small. And do this. Add some more volume over here. Some here. Here also I will do this. Push it in here and then use my pinch brush. Add more volume over here. Smooth it out. Smooth this out. I need more volume over here. This goes like this. Smooth this, smooth this, smooth this. Here also I need smoothing. Here is a very prominent line always. Here I will do some more, and here some. I will push this in a bit. Add some smoothing here. Make center line more chiseled. Add little details over here. Here. For the ear part, I'm gonna just push it, make it more clearer. Push it inside, make it out like this, smooth it, and then push. And then smooth. Always add details so that इसका ear boxers effect ना दे. Boxers effect के अंदर काफ़ी ज़्यादा
ईयर जो होता है वो पफ्ड होता है क्योंकि उसके ऊपर बार बार चोट लगती है. As I can see, मुझे इस पार्ट को स्लाइटली इन्वर्ट करना है. और मुझे कानों को स्लाइटली आगे करना है. I need to make this bit slim and I can see here it has more cylindricalness, but this does not affect the fact कि हाँ ये एनाटॉमी लिटरली किसी भी ह्यूमन की हो सकती है. लिटरली किसी भी ह्यूमन की हो सकती है. आप कभी भी कोई गलत एनाटॉमी बना नहीं सकती क्योंकि ह्यूमंस के अंदर हमेशा कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसा ह्यूमन मिल ही जाएगा कि हाँ अरे मैंने तो इसका स्कल्प मैंने ऐसे कुछ स्कल्प बनाया था एंड दिस ह्यूमन एग्जैक्टली लुक्स द सेम. मैं आँखों को थोड़ा छोटा करूँगा because they look a bit too much, slightly outside here. Then I will do pinch to get this line more prominently. And smooth this out a bit. थोड़ा इफेक्ट तो स्मूथनेस से आप ला सकते हैं. Here also I will do the same. For this I'll press G, move brush and push this in, push the whole thing in a bit and make some room for the pin for the eyes like this. Some more smoothing. And nose, as you can see, is bit low, so I'm gonna push it up. Here I will add some more volume on the bottom of the lips. So this is what we have so far. It took us 4,157 steps to make this face. You can further smooth it or make some more adjustments to suit your desires. Or for some people they use base meshes to create their faces. Nothing wrong with it, completely understandable, but for practice one should always try to do it from sphere, because that's how you will learn to make the forms from ground up. Smooth from different sides. Let's make some eyebrows. As you can see, यहाँ पे आपको देखना है कि अब हम eyebrows कैसे बनाएंगे. हमें यहाँ पे पहले eyebrow bone को
बनाना पड़ेगा, जो कि इसके ऊपर अभी तक हमने ढंग से काम भी नहीं किया. A bit like this, like this. This adds more realism in the sculpt. As you can see, very much different. And here we will add a bit of more flush. Nice. Whenever you see something wrong, smooth it first before making changes. मेरे को ये इंडेंटेशन थोड़ा पसंद है तो मैं यूज़ करूँगा. I'll press move brush, move it up a bit, and here I will do this, smooth the hell out of it and move it up. See, huge difference. Eyebrows, I forgot. Here, mask this, make brush smaller. From here, it's little above, or what you can do is this works for me, I guess. Will do. I will take inflate, not this too high. It's there. Now what I'll do is take the damn standard and poke some holes in it. Yeah, it's good, it's way too far. Smoothness from the sides to give it a better look, and then again. There are some hair flow tips that you can find on YouTube, or you can use make this in layers also. Where'd you go? Interesting. Layers. Here, you can do it in layers also. But for me, this is fine. I will go with that. Now it's time to add some hair. I will do this the old style, old way, old school. Bring back the primitives. Fuck all your politics.
this, a bit like this. I need more coverage over here, like this, here, and then this, here. I can extract this with zero thickness, extract, accept, and we have this mesh. I will take the farthest part, and as you can see इसने वॉल्यूम्स क्रिएट किए हैं, डिफरेंट पॉलीग्रुप्स हैं हमारे पास. मैं इसको लूँगा और डिलीट रिटन, एंड देन आई विल यूज़ लोअर काउंट of Dynamesh and Dynamesh it. This gives us this helmet that we could use. मैं इसकी पॉली पेंट कौन रखूँगा so that we can see. This buzz cut look fine right here. For hairs, always try to gather references. References in here is your partner. The more references you have, the better chance for you to create realistically fine looking hairs. Currently I'm eyeballing it because I don't feel like making hairs right now, because I feel it very tedious. This was very tedious process for me. Now I will push them up a little, add some more volume to the head, to the hair. Push this inside. Here, here, here. This third, fourth view is slightly different, but I guess this will do for now. I will make a cylinder, take a cylinder, make it down, slightly up, use bend curves, and add some more strands. Add some more details. As I said, more reference you gather for the hair part is more realistic. I can apply, accept and mirror this and duplicate this. Press X for the symmetry. Control Shift T again to make a duplicate out of it. As you can see, it's a very tedious process. That's why I don't like it.
you can further refine the hair a bit more smoother. For this, Revik, Revik to this brush, I like. Tone down the intensity. This creates very sharp hair strands, I guess. I'm not sure. Claws, but this helps me to अच्छे forms create करने के लिए. It's very good. मेरे को एक दिक्कत लग रही है इसके अंदर, that cheekbone part should be out a bit. ये वाला part, हाँ, to give it more volume. Yes. Interesting. So here we have the practice, and it took us almost for 4,560 steps to make Thanks for watching. See you soon.